Hello students, my name is Dr. Kabilori, working as lecturer in Civil Engineering Department at Mirchand Polytechnic College, Jalandhar City. Students, मैंने आपको सॉइल एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट पढ़ाना है। इसका जो सब्जेक्ट कोड है 4570। सबसे आज जो मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा वो है इंट्रोडक्शन चैप्टर इस सब्जेक्ट का। और इस चैप्टर में आपने पढ़ना है what is soil, soil mechanics and soil engineering. Brief historical development. Importance of soil studies in civil engineering. Formation of soils. Engineering classification of soil. Differentiate between clay and sand. Regional deposits of soil. Local soils in northern India. Name of some soils generally used in practice. Soil profile and its engineering significance. तो स्टूडेंट्स सबसे पहले जो हमारे पास डेफिनेशन है वो सॉइल। स्टूडेंट्स ये डेफिनेशन को करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि आपको इसके बारे में थोड़ी सी अवेयरनेस है व्हाट इज सॉइल, क्योंकि आपने जो थर्ड सेमेस्टर में सब्जेक्ट पढ़ा था कंस्ट्रक्शन मटेरियल, उसमें जो फर्स्ट चैप्टर था रॉक्स, और उस चैप्टर के अंदर आपने पढ़ा था रिगार्डिंग फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स, क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स। क्लासिफिकेशन और रॉक्स में आपने पढ़ा था जोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। और जोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में स्टूडेंट्स आपने पढ़ा था कि इग्नियस रॉक्स कैसे फॉर्म होती हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे फॉर्म होती हैं, और मेटामॉर्फिक रॉक्स कैसे फॉर्म होती हैं स्टूडेंट्स। तो उसी के साथ रिलेटेड ये है कि सॉइल्स कैसे ये फॉर्म होती हैं। तो स्टूडेंट्स इसकी अब डेफिनेशन मैं आपको सुना रहा हूँ। इसको सुनते ही आपको सब समझ में आ जाएगा कि सॉइल जो है कैसे फॉर्म होती है। तो स्टूडेंट्स इन इंजीनियरिंग टर्मिनोलॉजी the unconsolidated mineral material at or near the earth's surface including air, water, organic matter is referred as soil. स्टूडेंट्स आपको इसका मतलब पता है व्हाट इज अनकंसोलिडेटेड मिनरल मटेरियल। अनकंसोलिडेटेड मिनरल मटेरियल का मतलब क्या होता है? लूज मिनरल मटेरियल विच इज अवेलेबल एट और नियर दी अर्थ सरफेस। और उसके अंदर क्या होता है? इंक्लूडिंग एयर, वाटर, ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है स्टूडेंट्स, it is a non-homogeneous, porous and earthen material whose nature is greatly influenced by changes in intensity and moisture content. The term soil originates from the Latin word solium, which had the same meaning as our modern word. It has various meanings depending upon the field in which it is being considered. Students, अब आगे है डेफिनेशन ऑफ सॉइल अकॉर्डिंग टू वेरियस पर्सनालिटीज। तो स्टूडेंट्स ये सारा उसी चीज के साथ ही रिलेटेड है रिगार्डिंग योर क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स। अकॉर्डिंग टू वेबस्टर, it is defined as the loose surface material of the earth in which plants grow, in most cases consisting of disintegrated rock with an admixture of organic matter. According to J.S. Joffe, it is defined as the soil is a natural body differentiated into horizons of minerals and organic constituents, usually unconsolidated or variable depths, which differs from the parent material below in morphology, physical properties and composition and biological characteristics. Students, morphology क्या होता है?
It means science of organic form. According to Chambers Dictionary, it is defined as the mold on the surface of the earth which nourishes plants. It clearly indicates that soil has different meaning and is defined in one's own way of thinking. So, as per IS 2809-1972, it is defined as sediments or other unconsolidated accumulations of solid particles produced by the physical and chemical disintegration of rocks and which may or may not contain organic matter. तो स्टूडेंट्स ये आपने सॉइल की डेफिनेशन पढ़ ली, वेरियस जो है साइंटिस्ट की के फॉर्म में वेरियस साइंटिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ ली। ये सारी चीजें यही बता रही हैं कि जैसे हाउ जियोलॉजिकल रॉक्स आर फॉर्म मींस जो जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। ठीक है स्टूडेंट्स, जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, देन हाउ द सॉइल इज disintegration of rocks। ठीक है स्टूडेंट्स, various interpretations of soil as per various agencies and professions and agriculturist। अब agriculturist की form में क्या है, is concerned only with the top, is concerned only with the top superficial material. He restricts the term soil to only a couple of meters deep in the earth crust, useful for the sport and growth of plants। ठीक है, तो एग्रीकल्चर की फॉर्म में सॉइल का डेफिनेशन है, is concerned only with the top superficial material. He restricts the term soil to only a couple of meters deep in the earth crust, useful for the sport and growth of plant life। Geologist की फॉर्म में क्या है, is concerned with the disintegrated material on top of the original rock। He restricts the term soil for the material capable of supporting vegetation in the thin surface zone of the earth crust within which roots occur। और सिविल इंजीनियर की फॉर्म में क्या, हैज टू गो फॉर ग्रेटर डेप्थ्स even up to the bedrock or deeper in order to rest his structures safely। He restricts the term soil for uncemented deposits of minerals containing air, water, organic matter, and other substances lying therein। Uncemented deposits include materials like silts, sands, gravels, boulders, etc। अब स्टूडेंट्स अपने सॉइल की डेफिनेशन पढ़ ली है कि सॉइल जो है वो कैसी फॉर्म होती है। अब स्टूडेंट ये जो डेफिनेशन है सॉइल मैकेनिक्स, ये जो सॉइल मैकेनिक्स है, ये इसमें क्या है कि हमने जो सॉइल को अच्छी तरह से स्टडी करना है और इस तरीके से स्टडी करना है ताकि हम जो उसकी सुटेबिलिटी एज ए फाउंडेशन मटेरियल एंड एज ए कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो है हम उसको फाइंड आउट कर सकें। और ये जो सुटेबिलिटी हमने जो फाइंड आउट करते हैं वो हम फाइंड आउट करते हैं थ्रू दी वेरियस लॉज ऑफ मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, so it is that branch of physical science which deals with the properties, nature and performance of soil as a construction and foundation material। It is one of the youngest disciplines of civil engineering involving the study of soil, its behavior and application as an engineering material। Jackie defines soil mechanics as soil mechanics is the application of the laws of mechanics and hydraulics to engineering problems dealing with sediments and other unconsolidated accumulations or solid particles produced by the mechanical and chemical disintegration of rocks
regardless of whether or not they contain an admixture of organic constituents. IS IS 2809 1972 defines soil mechanics as that branch of engineering which deals with the application of soil science, the statics and dynamic laws and principles and mechanics and hydraulics to engineering problems dealing with soil as a structural material. The purpose, the purpose of studying the soil mechanics is to replace by scientific methods the empirical methods of design used in earthwork and foundation engineering. So, is so, so the purpose of studying the soil mechanics is to replace by scientific methods the empirical methods of design used in earthwork and foundation engineering. So the purpose of studying the soil methods, the purpose of studying the soil mechanics is to replace by scientific methods the empirical methods of design used in earthwork and foundation engineering. So बेटा पहले कैसे हम जो स्ट्रक्चर जो फाउंडेशन वो कैसे डिजाइन करते थे वो करते थे बेस्ड ऑन एम्पिरिकल मेथड्स. सो अब जो है वो एम्पिरिकल मेथड्स को हमने रिप्लेस कर दिया है बाय न्यू साइंटिफिक मेथड्स फॉर डिजाइनिंग दी फाउंडेशन स्ट्रक्चर्स and and to find out the suitability of the soil as a foundation material as well as a construction material. So objectives of soil mechanics. Objectives of soil mechanics are to perform soil investigations and to develop methods for soil sampling. To classify the soil properties in the light of civil engineering problems. To apply the soil results to the use of soil in place or as a construction material. सॉइल इंजीनियरिंग नाउ व्हाट इज सॉइल इंजीनियरिंग बेटा आपने सॉइल भी पढ़ लिया है सॉइल मैकेनिक्स भी पढ़ लिया है अब क्या डेफिनेशन है सॉइल इंजीनियरिंग soil mechanics applied to engineering problems is called soil engineering. Therefore, it is of utmost importance that a civil engineer should have a thorough knowledge of soil mechanics. Brief historical development. So, बेटा ये जो है ये ये है Romans built notable engineering structures such as harbors, aqueducts, bridges, large public buildings and roads, pyramids of Egypt, hanging gardens of Babylon, Leaning Tower of Pisa, Great Wall of China, Taj Mahal of India are still more examples of great structures built centuries ago. तो इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वो क्या है ताजमहल. ताजमहल की क्या खासियत है वो स्टूडेंट्स वेल फाउंडेशन की बनी हुई है और जो भी वेल और वो जो वेल फाउंडेशन जो है वो मेजनरी सिलेंड्रिकल वेल है. ठीक है स्टूडेंट्स. The stage of scientific reasoning in the design of foundations started with the publication of a book on soil mechanics by Dr. Kaul Tarjagi in 1925. Many investigators in the field of mechanics were inspired by him. Some of the notable personalities who followed his footsteps were Arthur Casagrande, A.W. X. Kempton, Proctor, and Tyler Peck. Soil mechanics now has become core discipline of civil engineering.